फिजिक्स क्लास 10 यूनिट 10 और क्लास हमारा है क्लास नंबर 7। प्रीवियस क्लास में हमने जो स्टडी किया था वो शो दैट मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर उसमें हमने रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला फाइंड किया था, F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस KX। टाइम पीरियड का फार्मूला हमने प्रूव किया था, उसमें हमारे पास F रिस्टोरिंग का फार्मूला था, F रिस्टोरिंग प्रीवियस क्लास में माइनस KX। टाइम पीरियड का फार्मूला था T इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइड बाय k। ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए थे लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम और असाइनमेंट और एग्जांपल में यूज की थी। यानी रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होनी चाहिए थी। और इस फॉर्मूले में जब हम टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ स्प्रिंग होना चाहिए और स्प्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए कि हम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। इसी टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं और मास भी फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले जब हमने क्लास में यूज की थी रिस्टोरिंग फोर्स का भी और टाइम पीरियड का। आज हमारा जो क्लास नंबर 7 है, आज हमारा टॉपिक है शो दैट मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब पेंडुलम की जो मोशन है उसको हमने प्रूव करना है कि ये भी क्या होता है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मेन दो कंडीशन होती हैं। पहला कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या होता है, acceleration is directly proportional to the restoring force, acceleration is directly proportional to the displacement x। और सेकंड कंडीशन क्या होता है, restoring force is directly proportional to the displacement x। तो ये दोनों कंडीशन अगर प्रूव हो जाएंगे तो फिर ये सिंपल पेंडुलम का मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो इसके लिए हम ये सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या चीज होती है। तो पहले हम सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम इसके मोशन की तरफ आएंगे। फर्स्ट हमारा आ जाता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? A mass suspended by a weightless and an extensible string is known as simple pendulum. This arrangement is known as simple pendulum. A mass suspended by a weightless and an extensible string is known as simple pendulum. Simple एक mass को हम suspend कर लेंगे। This is a rigid support string, mass of pendulum। ये mass of pendulum, ये length, ये mass m, ये mass m है। This mass of pendulum is known as bob of the pendulum। इसको हम क्या कहते हैं, bob भी कहते हैं, B-O-B, bob of the pendulum। किस पॉइंट पे, इनिशियल एट पॉइंट O, ये मीन पोजीशन है। इस पेंडुलम में क्या होना चाहिए, एक तो जो ये मास है, ये मास क्या होगा, ये मास the bob is small as compared to the length। पहला पॉइंट, the size of bob is small as compared to the length। Secondly, the mass of string is less than the mass of bob। पहली बात तो ये है कि जो बॉब का जो साइज है वो लेंथ से कम होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, इस स्ट्रिंग का जो मास है, स्ट्रिंग का मास लेस देन मास ऑफ बॉब, वो बॉब के मास से लेस होना चाहिए। एंड स्ट्रिंग इज स्ट्रेट नॉट स्ट्रेच्ड। ये जो स्ट्रिंग है या ये जो थ्रेड है या धागा जो है ये स्ट्रेट होना चाहिए, नॉट स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। इसमें इलास्टिक मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ये इस तरह मूव ना हो, इस तरह इसकी मूवमेंट ना हो, स्ट्रेच हो, सीधा हो, स्ट्रेच ना हो। तो इस चीज को फिर हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। अब इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉब एंड इट इज ए साइड, ये एक साइड पे हो जाएगा। इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, अप्लाइड फोर्स, बॉब पॉइंट O से डिस्प्लेस होके पॉइंट B, पॉइंट A पे आ जाएगा। The bob displaced from point O to A. This distance called x. O to A x and A to O minus x. Again O to A is x and A to O is negative x. Direction show opposite direction to the displacement x. Now when we release the pendulum from this point, the pendulum start to and fro motion around the mean position O। start to and fro motion, ये start कर लेगा to and fro motion और 2 पॉइंट्स के दरमियान में आ जाएगा A और B के दरमियान। the pendulum start to and fro motion if we neglect air drag and friction forces।
force of air resistance. If we neglect air drag and friction forces, then this motion of simple pendulum is periodic. ये simple pendulum motion क्या हो जाएगा? Periodic हो जाएगा at point O. Now, how much force is acting on this ball? Two forces acting on the ball. One is the weight of the ball acting downward, and second is the tension of the string acting upward. First force acting weight of the ball, and second force acting on tension force on the string. Weight acting downward, tension acting upward. Now we resolve the weight force into two rectangular components. Now we can resolve the weight force into its component. These components are two. If the angle is on this place, opposite side of angle is known as vertical component. Opposite of angle, this side is known as vertical component. Vertical component of weight is known as Wy, and the adjacent side of angle, this is known as horizontal component, which is denoted by Wx. As we know that vertical component is always equal to mg sin theta, and horizontal component is always equal to mg cos theta. It means vertical component of the weight is equal to mg sin theta. Horizontal component of the weight is equal to mg cos theta. First component mg cos theta, horizontal component mg cos theta. Mg cos theta balances the tension force. There is no motion along the horizontal direction. Therefore, mg cos theta is the horizontal component which balances the tension force. And second force is known as mg sin theta. Second component is vertical component mg sin theta. Mg sin theta is the component which acts against the restoring force. In the restoring force is equal to the mg sin theta. The restoring force is the motion of a simple pendulum is along the vertical component. Therefore, the restoring force is equal to minus mg sin theta. Restoring force is the responsible against the vertical component. If the value of theta is so small, then the value of sin theta is equal to x divided by l. The value of sin theta is equal to x divided by l. So this is the equation number 1. Putting the value of sin theta in this equation 1. So F restoring is equal to minus mg, or sin theta can be changed into x divided by L. F restoring is equal to mg divided by L into minus x. Arrange the value of m, g and L. M, mass of the block, constant during motion. G is equal to gravity, constant. L is the length of pendulum. These three values are constant. So F restoring is equal to constant minus x. Constant equality change into proportionality. When equality change into proportionality, eliminate the value of constant. Constant can be removed from the equation. F restoring is directly equal to minus x. This is equation number A. This is equation number A. This is the first condition of simple harmonic motion. Restoring force is directly proportional to the displacement x. This is the first condition of simple harmonic motion. Since we know that when a force acting on the body, when the restoring force acting on the body, according to the second law of motion, acceleration is produced. So F restoring is equal to ma. F restoring is equal to ma. This is equation number
1, this is equation number 2. Comparing equation, this is equation 1, so this is equation number 2, this is equation number 2, and this is the equation number 3. This is the equation number 3. Comparing equation 2 and 3, F restoring is equal to minus mg x divided by n, or F restoring is equal to ma. Comparing equation 2 and 3, we get 2 or 3 comparing. Ma is equal to minus mg divided by n into x. Cancel the value of m and n, dividing both sides by n. A is equal to g divided by l into minus x. In this equation, g and l is again constant. G is equal to gravity, l is the length of the pendulum. These values are again constant, so A is equal to constant minus x. Again we replace the equality into proportionality. A is directly proportional to minus x. This is the equation number B. The relation A, restoring force is directly proportional to displacement x, and relation B, acceleration is directly proportional to the displacement x. This is the second condition of equilibrium. Any motion in which present these two conditions, relation A and relation B, that motion is known as simple harmonic motion. So the motion of a simple pendulum is the simple harmonic motion. Characteristic of simple harmonic motion. This is simple pendulum. This is initial point O. When we displace the pendulum from point A, covered displacement x. When they release the pendulum, it starts to and fro motion around point O. This is the first characteristic of simple harmonic motion. When the pendulum release, it starts to and fro motion around mean position A. Secondly, acceleration and restoring force is directly proportional to the displacement x. Acceleration and restoring force is directly proportional to the displacement x. This is the second condition of equilibrium. Third, restoring force and acceleration is maximum. Restoring force and acceleration is maximum at extreme position and zero, minimum at the mean position. Velocity is maximum at the mean position and minimum at the extreme position. Kinetic energy is maximum at the mean position and minimum at the extreme position. And potential energy is maximum at the extreme position and minimum at the mean position. This is the characteristic of simple harmonic motion. And in the next class, we study the time period and frequency of the simple pendulum. How we can derive the formula of time period. This can be proved in the next class. Thank you.